हाय एवरीवन, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स और हैक्स बताने वाली हूँ दैट आई यूज ड्यूरिंग माय ग्लोई मेकअप. I can carry this makeup on an everyday basis. It's not so heavy, but it makes your skin look flawless and healthy. So stay tuned and keep watching till the end. So we're gonna start with hydrating our skin first. So this is the hydrating cream that I use. Next we're gonna hydrate or moisturize our lips. My next hack is this Nivea cream. जब भी हम लोग फाउंडेशन लगाते हैं so we get some kind of cakey and cracked look. तो moisturize so good, so well that वो cracked look नहीं आती है. I will definitely recommend you to try this at least once. You will get to know how helpful it is. मैं सिर्फ जब भी फाउंडेशन लगाना है या हल्का लाइट मेकअप करना होता है बस तभी लगाती हूँ. अदरवाइज आई डोंट यूज़ इट रेगुलरली एज माय मॉइस्चराइज़र, क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी ऑयली सा हो जाता है इसकी वजह से. डेली बेसिस गाइज आई डो नॉट प्रेफर हैवी फाउंडेशंस, सो आई यूज़ दिस 9 to 5 BB क्रीम, CC क्रीम, वट एवर यू लाइक. फाउंडेशन जैसा टेंट भी देता है एंड इट्स नॉट सो हैवी फॉर द स्किन, और स्किन थ्रू आउट द डे ब्रीथ भी कर सकती है एंड इट लुक्स सो फ्लॉलेस. I like to blend it with my hands. I hope you can see how beautifully it has been blended and absorbed by my skin. And this is because of the Nivea cream. Because I don't use concealer on a daily basis, but आप थोड़ा सा इसका यूज़ कर सकते हैं. हमें थोड़ा सा ग्लोई मेकअप चाहिए तो हम थोड़ा सा उन पॉइंट्स पे लगाएंगे जहाँ पे हमें हाइलाइटर लगाना है एंड लगा रहे हैं. दीज आर द रीजन्स जहाँ पे हम हाइलाइटर भी लगाते हैं एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स इट ग्लोई. We are going to correct our eyebrows after the concealer. You can see I used this brown color because even if my eyebrows are much darker than this, black color यूज़ करते हैं तो थोड़ा unnatural look हो जाता है and I don't prefer that. तो मैं थोड़ा सा लाइट ब्राउन यूज़ करती हूँ एंड wherever I think जहाँ पे मेरे ग्रोथ कम है वहाँ पे मैं हल्का सा शिफ्ट शेड देती हूँ, बहुत लाइट. यूज़ इट वेरी लाइट हैंडेडली आपको यूज़ करना. ट्राई टू यूज़ इन द डायरेक्शन जहाँ पे भी जैसे भी आपकी हेयर ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में. एंड इसमें पीछे ही एक आईब्रो ब्रश है. सो नेक्स्ट व्हाट आई लाइक इज दिस Maybelline Fit Me लूज पाउडर. बहुत लाइट डार्क करना है इसको. If you have an oily skin, this is very good for you. It settles the base that you have applied before. A little bit I use this lipstick as my eyeshadow sometimes. All over your lid and some above that as well. Regularly you can wear this makeup, either you go to your jobs or you have your college. तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा ओवर नहीं रखेंगे, but we want our skin to look more natural and healthy. We want a glowy makeup, so I'll use this eyeshadow palette and we'll just use a little bit of glitter above your eyeshadows. Sometimes I use this cream based, or you can either use powder based. I think I'm going to blend it with my blender. Like to apply eyeliner or kajal on a regular basis, then you can carry on with that, but I prefer using mascara for it. Lastly, I'm going to highlighter. So I'm using the powder highlighter. So on my cheekbones. As I told you, these are the points where I applied the concealer.
That's it. So now I'm going to go on to the lipstick. I go with this light brown pencil to line up my lips. And go on with a light color in the center. Now if you like it to be matte, then you can keep it like this. Otherwise, I sometimes use this transparent gloss so that I don't have to buy more lipsticks and I can make this glossy. Here we are done with the complete look. I hope that you like it. So there you have it, all the tricks and hacks for a light glowy makeup. Thank you for watching this video, and अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो then give it a like and subscribe to my channel for upcoming videos. See you soon. सत श्री अकाल.